Hello everybody, Namaskar. I am Dr. Mukesh Pareek and I think I have started the class before 2 minutes today. So come live. Today we will read the text of Prologue to the Canterbury Tales. Say hi to me so that I can know how many of you are present. Should we begin? Vivek Shukla, Kiranji, good morning. Namaskar to all of you. Purti beta, hello, how are you? A very good student. I will wait for some time so that all people can join. I would like to say something. Those who have just joined to me, can you arrange two phones? Because in the Facebook live class, it is not possible to teach you text without, because in this lockdown period, I don't have my board and a projector and all, because all these things are there in the classroom. I'm at my home. So can you arrange two phones? And on the other phone, you can go to my website, mukeshpareek.com, and go to my blog there. I have uploaded a very special text where original text and the simple English text line by line is mentioned there. Hello, respond me please. Can you arrange two phones so that on one phone you can see me and on the other phone you people can access to the text. Hello, can you access to two phones or your laptop? And yeah, those who can access to two phones, let me explain to them that please go to my website www.mukeshpareek.com, and I have my blog there. It will take some time for you to search, and I have uploaded a text over there, a very special text, and those who are the regular students of our class, offline and online, I have sent them the PDF. So can you upload this video in the YouTube, sir? We will do one thing. We will take another. I don't know if you know like how Facebook's video can be uploaded on YouTube. Then you please tell me, because I don't know that. I think it is possible, but there is some technicalities are required. Hello, those who are serious students who have joined me, I welcome you all to my Facebook channel. Yes, those who got it on Telegram also. Anyhow, just you. But I would love if you go to my website. But because if you go visit to my website, then my website will come up in the search engine. Shubham Kumar Yadav, no sir, I can't. No beta, no problem Shubham. I will try to teach in such a manner that I will explain all and each and everything. अगर एक फोन में हो जाता है split screen, yes, somebody is telling me that there is a possibility of split screen, then you can go to my website www.mukeshpareek.com and go to my blog there, and recently I have uploaded Prologue to the Canterbury Tales. It is automatically get uploaded on YouTube. How can? No, this is not YouTube, na. This is Facebook Live. Facebook Live video. It takes some technicalities to upload on the YouTube. Join us as soon as you can without wasting your time. And those who are first time watching me, let me inform about myself that my name is Dr. Mukesh Pareek, and I have been teaching English literature. Earlier I taught in many colleges, and but then I left all my jobs, and I have been single-handedly running my own institute, and I have given many selections for NET and JRF, and Telegram account is there with the name of Dr. Mukesh Pareek. If you can search it. And
I have come live on Facebook just because I thought like many students need me. से बाद में अपलोड हो जाता हो, देखते हैं शुभ्रा, देखेंगे, मुझे बता देना कैसे अपलोड करते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इससे तो अच्छी बात ही कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, इजाजत दीजिए, स्टार्ट करें। We will read the text now. अच्छा, text, there is a method of teaching text. I will not be teaching every single line, but I will I will read and I will tell you like what is the exact meaning, then what are the important features over there which are required for us from the examination point of view. Keep it in mind that we are studying text because we can face certain questions there. Okay, so general prologue. Before I move to the general prologue, let me talk about that. Tomorrow, in the tomorrow's class, we will be talking about different tales told by different characters in the Canterbury tales. And tomorrow we will also play a quiz also. So tomorrow will be the concluding session of Chaucer. So today let us see for how many hours. It's not possible for more than 1 hour to look at constantly looking at a screen. Sir, एक बार blog वाला बता, www.mukeshpareek.com, mukeshpareek.com. If you go there, you will find my blog. It is my website. On the blog, you will find Prologue to the Canterbury Tales. Now, without wasting a single moment, let me start. So, the text which I am reading right now, sir, start kar dijiye. Okay, I'm starting. When that April with its showers suit, when April with its sweet smelling showers, the drought of March hath purged to the root. So the writer has started his poem with this couplet, that when the April month starts, there comes the showers and the weather becomes pleasant. So this is, the line number 1 and line number 2. So he is describing like, what is the season all around when, the April month comes, as you all know, with the advent of the month of April, there comes, pleasant weather, because, these are cold countries. So the thawing of the snow. सर इसको एक बार बता दीजिए प्लीज। अरे यार, इट्स सो सिंपल। वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे कहीं ना कहीं वो खुलेगी तो ब्लॉग दिया हुआ होगा, ब्लॉग पे आप टच करेंगे तो वो खुल जाएगा, उस पे आपको वो टेक्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो आई एम नॉट रीडिंग द स्टार्टिंग फ्यू लाइन्स बिकॉज देयर द राइटर इज सिंपली एक्सप्लेनिंग the season, the pleasant atmosphere, and then he's describing that how all the pilgrims, all the people, they go there and they devote their nights in the hostelry. एक word आया यहाँ पे, hostelry. The writer has used the word hostelry. Hostelry means a kind of inn, a kind of hotel. So now let me read. At night had come into that hostelry well 29 in a company. So this line 24 number line, the writer says that we are 29 in number. So if they are 29 in number, and then the writer will explain to us because before going to the hotel they are 29 in number. So it means it's a very confusing question. If you remember in the last exam, they asked this question, that how many pilgrims were there, and then there was a problem answering the question, because if we okay, today I will not read your comments, otherwise I will get distracted. Okay, so the writer says in the line number 24 that well 9 and 20 in a company of various sorts of people, by chance fallen in fellowship. By chance fellow in fellowship का मतलब कि by chance हम लोग आपस में मिले, because as you know that there is no plan when pilgrims go on a particular path, by chance they can meet each other. So then he starts describing in brief what he says. Directly he says in line number 33 and 34, and made forward early for to rise. राइटर कह रहा है कि मैंने इन सब लोगों को मना लिया कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, and made agreement to rise early to take our way where I will tell you. And then he starts talking about that all these pilgrims will start on their way.
Now, in line number 40, he says, and who they were, just a minute. Line number 38, to tell you all the circumstances. Writer says that I am going to tell you about the circumstances of all these pilgrims and who they were, wo kaun the, and of what social rank. What was their social rank, and also what clothing and that they were in. Writer says that I will also inform you that what was their clothing, and also at a night then will I first begin. और फिर वो कहता है, then he starts that I will start beginning with the night. So the night, as you all know that there are so many characters, 29 characters overall, and the writer will describe in almost in this prologue to the Canterbury Tales, he will describe their clothing, their horses, sometimes their facial features, their physical features, and their personality trait also. So he starts with the night. A night there was, and that one was a worthy man. Then he says that there was a night, and he was a worthy man, who from the time that he first began to ride out, he loved chivalry. So as you all know that Chaucer in this Canterbury Tales has told us about the three estates, like the gentry people, the working class people, and the clergy. So the first place, it is also very important for us to understand that what place is assigned to the assigned to which person. It means from the aristocratic point of view, from the nobility point of view, this character knight comes first. So he says that to riden out he loved chivalry. It means he loved chivalry, he loved bravery, he loved to fight, he loved to go into the wars. To ride out he loved chivalry, fidelity, and good reputation. So writer says that he was a person of truth, he was a person of reputation, he was a person of generosity, he was a person of courtesy. So there are four qualities. Fidelity, what is the meaning of fidelity? Loyalty. Then good reputation, then generosity, and courtesy. He was very worthy in his Lord's war. It means he fought, in his Lord's war. Lord's means his king's war. And for that he had ridden no man farther. And वो ये कहना चाह रहा है that he has gone to the far off countries that no man can go, as well in Christendom as in heathen lands. Line number 49, he says in line number 49 that 49 and 50 that he says that as well in Christendom. Christendom mean to say the countries where Christianity was there, and in heathen land mean to say heathen means the people who do not follow Christianity. It means he says that this knight had fought in different kind of countries and was ever honored for his worthiness, and he was honored everywhere, wherever he fought, wherever he went. Now he's telling us in which kind of countries he visited. He said that he was at Alexandria when it was won. Jab Alexandria ko jeeta gaya, when the city was won, he was there also. He had sat very many times in the place of honor. Above knights all nations in Prussia. He had campaigned in Lithuania and in Russia. So these are the countries where he had visited. No Christian man of his rank so often. Also he had been in Granada at the siege of Algeciras and had ridden in Morocco. So these are the cities the writer is talking about. So it means I will now skip, as I told earlier, that we will skip and then read and try to understand what he tries to explain. In line number 69, I'm jumping now. And of his deportment as meek as is a maid. This line is very important. They asked this as a question, that this person outwardly is very chivalrous, outwardly he looks very brave, but from inside, and of his deportment as meek as is a maid. It means he is as soft, is as shy as a maid. Okay, and he never yet villainy as say, he never yet said any rude word. वो किसी को rude word नहीं बोलता था knight in all his life unto any sort of person. किसी से उसने harsh बात, he never talked in a harsh manner.
in all his life unto any sort of person. He was a truly perfect noble knight. But to tell you of his clothing, now he's directly coming to his clothes. Like, let me tell you, Chaucer says that kaise kapde usne pehne the, what kind of clothing he was wearing. He says that his horse were good, but he was not gaily dressed. Horse was good because he was a soldier, so horse was his vehicle, but he was not gaily dressed. It means he was not dressed in a very fashionable manner. He wore a tunic of coarse cloth. Coarse का मतलब होता है एक rough kind of cloth. So he was wearing a rough kind of cloth. He wore a tunic of coarse cloth, all stained with rust by his coat of mail. ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है कि उसके कपड़ों के ऊपर जंग लगा हुआ है. There was rust and stains on his clothes. And then the writer says that for he was recently come from his expedition. It means he has joined the pilgrims, directly from a war. So this tells us, like, there are two qualities in this knight. On one hand, that he was a man of action, and on the other hand, he was a very spiritual person, that he was going on a pilgrimage. And third thing, that the kind of carelessness is shown in him, that he never paid attention to his clothes. But another point, which only, as I yesterday told you, that only a person or a good poet, one who is seeking truth in the people, can only look at this aspect of person, that from outwardly he was very chivalrous, from outwardly he looked brave and hardy person, but from inside he was just like a maid. And it is proved also later on, when he says, when there are two continuous tales are told of tragedy, then he says that please now don't tell me a tale of tragedy. So these are the qualities of the knight. For he was recently come back from his expedition and went to do his pilgrimage. Wente. अब हम धीरे धीरे let us talk about the kind of language this writer is using. उसने go की जगह पर went word use किया है, and the spelling is also W-E-N-T-E. So जब हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं, अच्छा मुझे बताइए, आप लोगों के पास टेक्स्ट है कि नहीं है? कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास टेक्स्ट है अभी, एंड दे आर रीडिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इन द बेटर मैनर. तो टेक्स्ट में यू विल फाइंड वन थिंग, दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा ई. ऐसा कहा जाता है कि इन द लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज में वो जो एक्स्ट्रा वॉवल है, विच वॉज नॉट प्रेजेंट, but in the written English it was very much present. Okay, and now I'm coming on line number 79. So this was the first character. Now I'm jumping to the second character. With him there was his son, a young squire. Okay, आपके पास पीसी है तो आप वो देख लीजिए इसका टेक्स्ट, लाइन नंबर 79. ओके, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, जैसे पूजा मदान ने जस्ट ज्वाइन किया है, अपना दूसरा फ़ोन ले लीजिए, अपने घर में कोई किसी की मदद ले लीजिए, कोई पीसी है आपके पास तो आप कंप्यूटर ले लीजिए, अपना लैपी ले लीजिए, एंड उसके बाद उसके ऊपर जो मैंने जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने ऑलरेडी एक पीडीएफ भेजी है जिसमें इसका टेक्स्ट है लाइन वाइज, और उसको आप एक्सेस कर लीजिए. नहीं तो मेरी वेबसाइट पे चले जाइए mukeshpareek.com, उस पर जाकर के मेरे ब्लॉग पे ये टेक्स्ट दे रखा है. मैं लाइन नंबर बोलता जाऊंगा और आप उसको लिखते जाना, ठीक है? चलिए, दैट्स गुड, दोज हु हैव, दैट्स वेरी गुड. इसका मतलब है यू आर वेरी सीरियस स्टूडेंट्स. चलिए, विद हिम देयर वाज हिज सन अ यंग स्क्वायर, अ लवर विद द लाइवली बैचलर. फ्रेंड्स, इसका जो बेटा है, हिज सन स्क्वायर, दिस कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ध्यान से पढ़िएगा इस कैरेक्टर को लेकर के. इन अवर एग्जाम दे हैव आस्क्ड अस मेनी क्वेश्चन. अब देखिए कि वो उस कैरेक्टर के बारे में कितना सारी आयरनीज उसके कैरेक्टर में जो है वो बताएगा. कि ऑन वन हैंड ही इज ही इज अ स्क्वायर. स्क्वायर मीन टू से, स्क्वायर का मतलब होता है द नाइट इन द ट्रेनिंग, मतलब कि एक सोल्जर जिसको ट्रेनिंग मिल रही है. ओके, तो बट देयर आर डिस्क्रिपेंसीज इन हिज कैरेक्टर. उसके कैरेक्टर में कुछ ऐसी ऑपोजिट चीजें दिखाएंगे. जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूं और क्लास में जाकर के और मैं थोड़ी वल्गर बातें करने लग जाऊं, तो इसका मतलब है कि मैं आउटवर्डली टीचर हूं, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें घुसी हुई हैं जो आर नॉट ऑफ वेरी कंसिडर्ड गुड फॉर अ टीचर. तो ऐसे ही राइटर किस तरह से आयरनीज जो दिखाता है वो, फॉर दिस चौसर इज फेमस. A lover and a lively bachelor. Lively bachelor mean to say that sexually he was active. Lively के यहाँ पे कई मीनिंग निकलते हैं. That he was sexually active and he was unmarried. So you can understand that he was not a man of character.
with locks curled as if they had been laid in a curler. यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ओरिजिनल टेक्स्ट में, दैट इज प्रेस. राइटर हमें क्या बता रहा है, व्हाट द राइटर इज टेलिंग अस, दैट he had curls, and the curls were so curly that it seems that this squire, he had them pressed in the night. जैसे गर्ल्स होती है ना जो रात को अपने कर्लर लगाकर सो जाती हैं ताकि सुबह अगर पार्टी में जाना है तो उनके बाल कर्ल रहे. इसका मतलब है हाउ क्यूरियस ही इज फॉर हिज आउटवर्ड अपीयरेंस. He was 20 years of age, I guess. The writer says that his age is 20. बताने की जरूरत नहीं है, तो इजी इंग्लिश है. देन अब सीधे आप जंप कीजिए लाइन नंबर 88 पे. आप लिखते जाइएगा जब जिनको समझ में कम आ रहा है, और दोज हु डू नॉट हैव टेक्स्ट राइट नाउ, वो मैं लाइन नंबर बताऊंगा, वो लिख लीजिए. आप क्लास खत्म होने के बाद उन लाइन को पढ़ लीजिएगा. यू विल कम टू नो दैट दीज आर द लाइन्स विच आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 88 नंबर लाइन पे मैं आ रहा हूं. इन होप टू स्टॉन्डन इन हिज लेडीज ग्रेस. वो अच्छे कपड़े पहनता था और उसके बाल कर्ल थे ताकि वो अपनी लेडी के सामने, लेडी मीन्स बिलावड, को इंप्रेस कर सके. ही वॉज एम्ब्रॉयडर्ड एज इफ इट वर अ मीड. एम्ब्रॉयडरी के कपड़े पहनता था जैसे कि लड़की हो, एज इफ इट वर अ मीड. अब देखिए जरा, हिज फादर वॉज ऑल्सो गिवन द क्वालिटीज ऑफ अ मेड. मीड हेयर मीन्स मेड, एंड द स्क्वायर, द सन ऑल्सो हैज द क्वालिटीज ऑफ अ मेड. इसका मतलब है द पेट्रियार्कल एटीट्यूड कि अगर कोई सॉफ्ट कपड़े पहन ले, जैसे मैं फ्लावर के प्रिंट का शर्ट पहन लूं, पिंक कलर पहन लूं, तो एक सेकंड लगेगा लोगों को ये मेरा जेंडर डिसाइड करने में कि इज गर्लिश, है ना, सिसी. तो राइटर द वे इन द मिडाइवल पीरियड वी यूज टू लुक एट मैस्कुलिनिटी. तो मैस्कुलिनिटी को कैसे नोटिस किया जा रहा है कि अगर उसके बाल कर्ली हैं और उसने अगर मतलब वो इंप्रेस करना चाहता है अपनी बिलवड को लड़कियों की तरह. ऑल फुल ऑफ फ्रेश फ्लावर वाइट एंड रेड, सिंगिंग ही वॉज और फ्लूटिंग ऑल द डे. ये क्वेश्चन नेट में आया है. वो सारे दिन बांसुरी बजाता है, फ्लूट. सो दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन दैट हु यूजेस फ्लूट अमंग द कैरेक्टर्स. सो दिस इज द पर्सन. इसका मतलब है द डिस्क्रिपेंसी यू कैन अंडरस्टैंड. ऑन वन हैंड he is a man of chivalrous. इसके हाथ में क्या होना चाहिए, तलवार, है ना. he should be a man of bravery, man of action, but instead of that all the feminine qualities are shown in him. and then जो फूल दिखाए हैं उसके एम्ब्रॉयडरी में, all full of fresh flowers, white and red. Red color is not associated, has never been associated with the pink and red with males, but here the writer shows that that kind of discrepancy का मतलब क्या होता है, कुछ different होना, कुछ opposite होना किसी कैरेक्टर में. अगली लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं, लाइन नंबर 92, दैट इज वेरी फेमस एंड एग्जाम में आई हुई है. ही वॉज एज फ्रेश एज इज द मंथ ऑफ मे. यू कैन राइट दिस लाइन. वो he was so young, he was so, it is the influence of the French poetry in this line कि राइटर दिखा रहा है कि he was as fresh as the month of May. It means he was very fresh in the sense he was quite young, lively. Then he says, line number 93, his gown was short with long and wide sleeves. Fashionable कपड़े पहने हैं, he was wearing fashionable clothes. His gown was short with long and wide sleeves. He well knew how to sit on horse and handsomely ride. इसका मतलब है, you must have seen boys, those who ride their bikes in a stylish manner when they pass from streets. If some girls are looking at them, the way they sit stylishly, and so the writer says that that he stylishly rides his horse. He knew how to make songs and well compose the words. He could song, make and well endite. This is the original line. This is another quality of this squire, that he was able to compose songs. It means he was a poet also. Again, a discrepancy. I'm not saying that a soldier cannot be a poet, but just imagine that we are talking about the period where wars were constant things, continuous things. So how could he get enough time? It means there must be something wrong with him, or I think उसके जो फादर थे वो कुछ करप्शन करते होंगे कि इसको जो ड्रिल्स होती हैं, एक्सरसाइजेज, द काइंड ऑफ ड्रिल्स विच आर कंसिडर्ड टू बी मैंडेटरी फॉर अ सोल्जर, उससे ये बचा लिया जाता था इसको. यू कैन अंडरस्टैंड. Joust and also dance and well draw and write. So he can do all the 4 activities.
जाउस्ट का मतलब उछल कूद कर सकता था, डांस कर सकता था. वेल कैन ड्रॉ, ही कुड ड्रॉ द पेंटिंग एंड कैन राइट ऑल्सो. He loved so passionately that at night time he slept no more than does a nightingale. This is again a very controversial line, that he used to make love. Students जब सेक्स करते हैं तो उसको सेक्स ना बोल करके प्योर इंग्लिश में, अच्छी इंग्लिश में मेक लव बोल देते हैं. So it means the writer says that he was very sexual. He was sexually quite active, and he's not married, but still he says, the writer says, he slept no more. It means he was always busy in making love, doing sex in the night. Courteous he was, humble and willing to serve. This is again another quality, that he was always willing to serve, a very sociable, courtly manners. इस स्क्वायर में कोर्टली मैनर्स दिखाए. एंड कार्व्ड बिफोर हिज फादर एट द टेबल. ये क्वेश्चन नेट में इस बार आ सकता है कि कौन, बिकॉज इन द इंग्लिश कल्चर दे हैव अ particular custom, that suppose I am a son and I am sitting beside my father, then I will simply help my father in carving the meat on the table, and I will serve him. Okay, so he used to serve, he used to carve on the table. It means he was very mannered, a man of manners. Now I am coming to line number 101. A yeoman had he and servants no more. इस स्क्वायर का एक सर्वेंट था जो योमन था. योमन को मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा. इट इज कंसिडर्ड दैट दिस पर्सन वाज ही यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट. योमन, हु इज योमन? द थर्ड कैरेक्टर. ही वाज द सर्वेंट ऑफ स्क्वायर, इन द सर्विस ऑफ स्क्वायर. और उसके बारे में जो खास इंपॉर्टेंट जानकारी है, दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम, इज गिवन इन लाइन नंबर 115. लाइन नंबर लिखते जाइए इफ यू आर सीरियस स्टूडेंट्स, if you don't have text right now with you. A Christopher on his breast of silver sheen. उसके ऊपर Saint Christopher. In English culture, all we have different kind of saints. Saint Anselm is there, Saint Christopher is there, so there are different saints, and different saints are patron to different kind of people. So the people who belong to forest, or the people who used to have a chivalrous kind of nature, these people's पेट्रन सेंट इज क्रिस्टोफर. तो इसने अपने इसमें लिखा है क्रिस्टोफर मेडल ऑफ ब्राइट सिल्वर ऑन हिज ब्रेस्ट. अपने ब्रेस्ट के ऊपर उसने एक मेडल पहन रखा है जिसके ऊपर सेंट क्रिस्टोफर की आकृति बनी हुई है. देयर इज एन इमेज ऑफ आइकन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर. एंड हॉर्न ही बार द बॉर्डरी वॉज ऑफ ग्रीन. उसके हाथ में एक हॉर्न है. कितने बच्चे हैं जिनको हॉर्न का मतलब पता है? Horn actually is not exactly the modern word. Line number 116. Just a minute, मैं आगे आ गया हूँ. Just a minute. Line number 115. Line number 15 में एक लाइन आ रही है, Christopher on his breast of silver sheen. Sheen मतलब उसके ब्रेस्ट के ऊपर, चेस्ट बोलना चाहिए था, बट इंटरचेंजेबली इन लिटरेचर द वर्ड ब्रेस्ट एंड चेस्ट आर यूज्ड. So what is he saying now? Now I'm jumping, I'm just skipping that. 118 number line. I'm coming to 118 number line. There was also a nun, a prioress. अब सबसे important character आ गया है कि I have read in many books that some people say that Chaucer was a feminist. But I consider that he was not a feminist. His actual outlook is quite masculine, and he is quite patriarchal. He is misogynist. कैसे misogynist क्या होता है? MISOGYNIST. Misogynist का मतलब होता है someone who looks down upon women or feminine traits. तो अब ये दिखा रहा है कि एक नन है. नन इज अ पर्सन ऑफ चर्च, कॉन्वेंट में रहती हैं. दे एब्निगेट द वर्ल्डली प्लेजर्स. मतलब कि वो शादी नहीं करती हैं. दे टेक अ वॉव दैट दे विल डिवोट दे एक्चुअली मैरी टू क्राइस्ट, ऐसा कहा जाता है. ओके, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट दैट. बट द राइटर शोज दैट, अच्छा, दिस इज माई हम्बल ड्यूटी टू टेल यू अबाउट द कस्टम ऑफ द करप्शन देयर इन द चर्च. आपको सबको मालूम है कि जो प्रायरस होती हैं वो एक होली लाइफ जीती हैं. But along with living a holy life, there was a lot much corruption also involved in the churches. So line number 118 पे देखिए क्या लिखा है. There was also a nun, a prioress, who was very simple and modest in her smiling. So
yeah, one who hates women. So who was very simple and modest in her smiling. Now modest का क्या मतलब है यहाँ पे कि मैं अपनी क्लास में तो काफ़ी मज़े से एक्टिंग करते हुए पढ़ाता हूँ. सो माई स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि आप बिल्कुल लाइटली पढ़ाया करो. सो एक बात बताऊँ आपको, देर आर टू वर्ड्स इन इंग्लिश. एक तो है मॉडेस्ट, अनदर वन इज शाय. शाय तो इज़ वेरी कॉमन वर्ड. अनदर वन इज कॉय. तो इसका मतलब है कि दिस अनमैरिड गर्ल, वन हु इज द प्रायरेस, वन हु हैज टेकन होली वाउज, अब उसने क्या कर रखा है, नहीं 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 मिस्टर यादव, रेडी टू कैनोनाइज इज नॉट करेक्ट. कैनोनाइज तो इंग्लिश कल्चर में डेथ के बाद किया जाता है. यस, जब आपको सेंट घोषित किया जाता है उसको कैनोनाइज बोलते हैं. एंड फॉर दैट, कैनोनाइजेशन का मतलब सभी बच्चे समझिए, कैनोनाइज होने के लिए आपको मिराकल्स प्रूव करने पड़ते हैं. तो प्रायरस के अगली स्टेज कैनोनाइज नहीं है. कैनोनाइज एक अलग वर्ड है. कैनोनाइज का मतलब है कैथोलिक चर्च डिक्लेयर्स यू that you have really proved certain miracle or shown certain miracles and then you are declared to be a saint. वो एक अलग चीज है. तो इसमें दिखाया है कि how worldly she is. थैंक यू वेरी मच शुभ्रा. चलते जाइए आगे. समझिए जरा ध्यान से. Who accept without complaint. There was also a nun, a prioress, who was very simple and modest in her smiling. अब इसमें modest in her smiling का क्या मतलब है? The writer is satirizing actually the prioress. In what sense he is satirizing the prioress? In line number 118 और line 19 में देखिए कि वो लोगों को देखती है लेकिन साथ में there is some sexuality involved. कि वो she is quite worldly actually. The writer wants to convey a message that her greatest oath was but बाय सेंट लॉय. ये क्वेश्चन 3 बार नेट में आया है, 3 या 4 बार. सेंट लॉय इज अ फेमस सेंट ऑफ लवर्स. जैसे कामदेव की कसम खाएं, तो कामदेव की कसम खाने का क्या मतलब है? दैट समबडी इज मोर सेक्सुअल इन हिज नीड्स. तो द राइटर इज वेरी फनी, इज फिल्ड विद ह्यूमर हेयर कि अगर ये जो प्रायरस है वो जब भी कोई कसम खाती है, व्हेनेवर शी टेक्स एन ओथ, whenever she swears in the name of Saint Loy. जैसे like she says, oh my God, Saint Loy. So we can understand what the writer wants to convey, that outwardly she has adopted Christianity, and she has taken holy vows to abnegate, to sacrifice the worldly pleasures. But from inside she's, psychoanalysis तो उस वक्त नहीं था. But I think, a deep writer is one, who can see the inside, the mind, one who can read the mind of, a character. So the writer, through his manners, जैसे कि अब psychoanalysis, when we read psychoanalysis, when we read psychoanalytical theories, so we know that, our body language is governed by our subconscious mind. So subconscious mind में कहीं ना कहीं the writer wants to convey here कि कैसे suppression of the sexuality is there. तो वो holy vows तो she has taken, but outwardly she is quite aware कि किसी को पता ना चल जाए. But from her manners she is very very उसको ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल religious फील करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके अंदर से उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस या उसका एक्चुअल पर्सोना सामने आ रहा है. ओके, मैं आगे आ रहा हूँ. लाइन नंबर 120 पे आइए. हर ग्रेटेस्ट ओथ वाज बट बाय सेंट लॉय. लाइन नंबर 21. एंड शी वाज कॉल्ड मैडम एग्लेंटाइन. उसका नाम एग्जाम में पूछा गया है. शी वाज मैन ऑफ. अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि 1400, क्योंकि आपको मालूम है 1380 के आसपास ये वर्क्स लिखे गए हैं, और रिफॉर्मेशन 100% नहीं आया था. रिफॉर्मेशन का ग्राउंड तैयार हो रहा था, लेकिन देयर वाज अ लॉट मच करप्शन इन्वॉल्व. अभी रिफॉर्मेशन में एग्जैक्ट रिफॉर्मेशन आता है इंग्लैंड में हेनरी 8 के बाद, जब कहते हैं कि, और बाइबल के काफ़ी सारे ट्रांसलेशन हो चुके थे, तब जाकर के हम कहते हैं कि हाँ ये रिफॉर्मेशन. बट हाँ, इज समवेयर यू आर राइट मिस्टर यादव व्हेन यू से दैट कि ये जो राइटर है इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज ही हैज द स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मेशन, इसीलिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां बोला जाता है, क्योंकि बदलाव है. इनके
देखिए, अगर कोई लड़की घूंघट में है हमारे परिवार में, हम बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस, आरएस ऑफिसर्स की फैमिली है, ओके, और उसमें आपकी मदर है और वो कहती है अपनी बहू को कि घूंघट निकाल, तो समवेयर वी बिकम सार्केस्टिक एंड वी क्रिटिसाइज दैट पर्सन, अपनी मदर को भी हम क्रिटिसाइज करेंगे। या एक पड़ोसन है, वो दैट नेबर, वुमन इन द नेबर, शी इज क्रिटिसाइजिंग द पीपल। साउथ इंडिया में तो देर इज नो कस्टम ऑफ वेलिंग, बट इन अवर नॉर्थ इंडिया there are many prevalent, old customs prevalent over here. So I'm just giving an example to explain to you that when we become ironical, when we become satiric, in our tone, it means somewhere we want change. Okay, so it means this writer wants change, and that is why his way of looking, his way of gazing, his way of explaining, the selection of his words, all these things are telling us that that he is broad-minded. Okay, he wants change around him. Okay, आगे आ रहे हैं, 9 number 20. His greatest oath was her greatest oath was but by Saint Loy, and she was called Madame Eglantine. Line number 122. She sang the divine service very well, intoned in her nose in a very polite manner. एक और सटायर कर दिया है that she is singing in nose. It means she's her singing is affected. It means she is very, very she's showing off, that she can sing well. And she spoke French very well and elegantly in the manner of Stratford at the Bow. ये आप नाम लिख लीजिए. In line number 126 there comes the reference of Stratford at Bow. It means राइटर बता रहा है कि वो इस तरह की इंग्लिश फ्रेंच बोल रही है जो कि एंग्लो नॉर्मन फ्रेंच, ऐसी फ्रेंच जैसे मान लीजिए somebody is from some particular area and vernacular tongue is more fossilized on his tongue, and then he says that जैसे आप देखिए Assamese the way they speak English, Haryanvis the way they speak English, South Indians when the way they speak English, so that kind of affected manner कि उसमें ओरिजिनल टच इज ऑल्सो देयर ऑफ वर्नाकुलर, और वो एंड दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे आर स्पीकिंग इन द फ्लॉलेस मैनर. तो दिस nun, this prioress, is showing off her French. At meals she was well taught indeed. एक और पॉइंट आया है दैट जब वो खाना खाती है सबके साथ में तो शी शोज हर मैनर्स. जैसे एग्जाम्पल है कि जैसे खाना खा के ऐसे ऐसे अपने होठ को बार बार पहुंचना. दिस शोज लाइक शी इज शोइंग हर मैनर्स. At meals she was well taught indeed. She let no morsel. Yeah, there was a problem. I'm sorry. Am I visible? Yeah. Line number 129. Nor wet her fingers deep in her sauce. मतलब जब वो when she takes a morsel and dip in her sauce, then she saves her fingers to be dipped in the sauce. It means how careful she is from from the outward point of view, from outwardly. Nor wet her fingers deep in her sauce. She well knew how to carry a morsel, that no drop fell upon her breast. Her greatest pleasure was in good manners. She wiped her upper lip so clean that in her cup there was seen no tiny bit of grease, and she had drunk her drink. So these are some of the basic lines which are very, very important, and these lines I read because these lines are exactly bringing in front of us all the different aspects, points of view, the way of looking, the way of behaving of the people, etc., etc. Okay, line number 136. Full seemly after her meat she roughed. Line 37. And surely she was of excellent deportment and very pleasant and amiable in demeanor. Demeanor meant to say that she used to talk in a very gentle manner. Hello, how are you? Yes, oh, in the name of Christ. She used to pretend a lot. I mean, see, the writer explains that she was not normal. She was a person who used to pretend a lot. And then I'm coming, as I told you that I will quite hop and jump today. I am jumping because all these things are continuously, the writer is satirizing. Line number 162. Line number 162, if you can skip. And after amor vincit omnia. Yesterday also, in yesterday's class also I taught you that she used to speak a particular oath. Amor means love,
Vincit means wins, omnia means all. Love conquers all. So this is quite, there is a kind of irony as well as a pun also. How pun? Because love conquers all, because love has two definitions. There can be a spiritual love, like suppose I say that devote your life in love. I suppose a priest says this, then we can understand that the priest says that love your fellow people. Okay. But suppose I say that devote your life in love, it also means that somebody is saying that a love guru is saying that devote your life in love. So we can understand that Chaucer is making fun of this prioress, and when she repeatedly says amor vincit omnia, सब लोग बोल के दिखाओ. Let us feel that we are reading in a classroom. Amor vincit omnia. Amor means love. It's a Latin word. Vincit wins omnia. So, and another 163 number lines. Another nun with her had she. So out of these 29 characters, the writer is saying that with this prioress there was a nun. She had another nun with her, who was her secretary and 3 priests. It means there was a group of 5 people, because 3 priests are also there. And tomorrow I will tell you that the one of the priests tells that fable of Canterbury. So that question also had appeared in the exam. Now I'm coming to line number 165. A monk there was, a fair for the mastery. It means now the writer is jumping towards a monk. Monk kaun hota hai? A monk is a person, a kind of one who has taken holy vow, one who lives in a monastery. जैसे nuns रहती हैं convent में, and जो monks होते हैं, they live in monasteries. They also abnegate the worldly pleasures. So the writer is how the writer is making fun of this person. Line number 168. Full many a dainty hours had he in stable. राइटर अब कैसे उसका मजाक उड़ाता है कि उसके पास बहुत अच्छे अच्छे घोड़े हैं. नाउ यू कैन इमेजिन दैट अ पर्सन हु हैज abnegated, sacrificed the worldly pleasure. What is the meaning of having good horses with him in his stable? तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसे कि एक नागा महाराज हैं, someone नागा महाराज and he has all the collection of good bikes and cars. It means that person is a corrupt one, or he is more involved in the worldly things or worldly pleasures. So the writer is making fun and showing us to the ironies and discrepancies in the characters. So he had very many fine horses in his stable. A question आया हुआ है कि किसके पास बहुत सारे stables हैं, horses हैं. And when he rode, one could hear his bridle jingle in a whistling wind as clear. और ना केवल इसके पास घोड़े हैं, not only that he has horses, that he has decorated the horses with the simple bells in the bridle. Bridle का मतलब होता है वो जो लगाम है जिससे bridle which can control a horse. A jingle in a whistling wind as clear and also as loud as does the chapel bells. So there is a kind of parallelism the writer has used here, that instead of this person should have devoted his life to listen to only the church bells. But instead of listening to the church bells, this writer is this monk is listening to the bells of the bridle. It means jingle of the bridle. It means this is again a perverted monk. Okay. I'm coming to line number 173. The rule of Saint Maurice or of Saint Benedict, because it was old and somewhat strict, this same monk let old things pass away. The writer makes fun of him. He says that this monk is no more interested in the actual teachings which a monk should read. What are the teachings? Like the teachings of Saint Maurice or the Saint Benedict. It is ऐसा कहा जाता है कि ये जो these two particular saints are very important, their readings are important, their books are very very important for a monk to read, so that he can be a bit spiritual. But instead of reading them, he says that these are outdated books. I'm jumping now to 180 number line. 180 is likened till a fish that is waterless. उसका ऐसा मानना है कि not that a monk when he is heedless of rules is like a fish that is out of water. This is to say a monk out of his cloister.
It means he says, ये उतनी important line नहीं लग रही मुझे, so now I'm jumping to 183 and I said his opinion was good. Now this is called satire. Writer says, जैसे monk बोलता है, the monk says that monk is dual. Monk is, outwardly different and inwardly different. So the writer says that he is a good fellow. तो ये एक बहुत important line है जिसमें writer wants to convey that on one hand the writer has shown to us all the discrepancies in the character. On the other hand he says that this monk is a good one. Now let us so this is by showing two characters from church, the prioress and the monk, the writer has made fun of the Catholic Church, the corruption in the ecclesiastical order. Ecclesiastical का मतलब होता है the people who belong to church or the teachings of the church or the lives of the church and all. Now I'm coming to line number 187. As Augustine commands, how shall the world be served? अगर उससे पूछे कि Saint Augustine, what are the teachings of Saint Augustine? तो he says that of tracking and of hunting for the hare was all his pleasure. But writer says, I'm coming to 191 line, he says that he does not pay attention to the teachings of Saint Augustine and is more busy in hunting. Line number 192, was all his pleasure, by no means would he refrain from it. Writer says that he cannot stop himself. बेल का साउंड बेटा, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द चर्च बेल्स, वो उसके घोड़े की जो लगाम होती है ना, घोड़े की लगाम के ऊपर छोटी छोटी घंटियां बांध देता है वो, ताकि घोड़ा जब भागेगा तो वो घंटियों की आवाज सुनाई देगी. तो उसको वो घंटियों की जिंगलिंग सुनना ज्यादा पसंद है बजाय कि चर्च के बेल्स की आवाज सुनना. तो हो गया ना डिस्क्रिपेंसी के. एक पर्सन है वन हु इज गेटिंग सम मनी फॉर हिज स्पिरिचुअल लाइफ, इज स्पेंडिंग दिस मनी ऑन वर्ल्डली प्लेजर्स. ओके, सो 191 लाइन पे आ रहा हूँ. वो हंटिंग पसंद करता है. ही सॉ हिज स्लीव्स लाइंड एट द हैंड विद स्क्विरल फर एंड दैट द फाइनेस्ट इन द लैंड. वो बहुत ज़्यादा महंगे कपड़े पहनता है. हिज क्लोथिंग, हिज ड्रेस इज वेरी कॉस्टली. स्क्विरल के फर के, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. स्क्विरल का फर, अब अंदाजा लगाइए कि स्क्विरल इज कॉस्टली. तो स्क्विरल के फर्स जो है वो उसके कपड़े पहनता है. And to fasten his hood under his chin, he had a very skillfully made pin of gold. Again, ये question exam में आया हुआ है कि उसके पास में एक gold pin है. Now, what is the authenticity or what is the exact meaning of keeping gold with you if you are a person of abnegation? The writer has shown again the discrepancy in the character. 198 number line. His head was bald that shone as any glass. उसका सिर इतना गंजा है और वो ग्लास की तरह चमकता है. ये क्वेश्चन भी नेट में आया हुआ है. लाइन नंबर 201 पे आइए. लाइन नंबर 201. his eyes were prompted and rolling in his head with gleamed like a furnace under a cauldron. उसका चेहरा इतना चमक रहा है जैसे कि कोई भट्टी. कॉल्ड्रॉन का मतलब एक्चुअली कढ़ाई होता है. ओके, और उसके अंदर उसकी जो आंखें हैं वो रोल कर रही है. सो अगेन अ वेरी ह्यूमरस टच. Line number 206. A fat swan loved he best of any roost, and he does not eat very simple meat. He eats the meat of a swan, which is very costly. His palfrey was a brown as is a berry. Berry मतलब बेर की तरह इसका जो घोड़ा है वो बिल्कुल ब्राउन कलर का है. So palfrey is also, the writer has used in different words for horses. Palfrey is a word for horse. Steed is a word for horse. Horse is a word. Gelding is a word for horse. So there are 2-3 words, 4 words at least the writer has used for different kinds of horses. A friar there were. 208 number line पे आइए. Now next character. A friar there was, a wanton and a merry. Wanton का मतलब बिगड़ा हुआ. एक फ्रायर है जो बिगड़ा हुआ है लेकिन मैरी है. मैरी मतलब वो बहुत खुश रहता है. A limiter, a very solemn man. Limiter का मतलब क्या होता है? There is a particular limit of a district, which is assigned by a Catholic Church to a particular person. He will go house after house and will, bring money for church in the name of tithes. मतलब वो चंदा लेकर के आता है चर्च से अलग अलग जगहों से. सो राइटर कह रहा है एक लिमिटर है. 210 लाइन पे आइए. In all the 4 orders of friars is no one that knows so much of sociability and elegant speech.
और ये जो हमारा फ्रायर है, ही इज़ वेरी सोशेबल, उसकी स्पीच बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, लोगों से बहुत मीठी बात करता है. ही हैड मेड वेरी मैनी अ मैरिज, उसने कई लड़कियों की शादियां कराई हैं. He had made very many a marriage of young women at his own cost. Again, a very great and hidden satire, a subtle satire. The writer wants to convey that, he used to pregnant the girls, and then by supplying his own money, he used to fix marriages for the girl. So that, his moral corruption is shown. Okay. Line number 216. With Franklin over all in his country. Franklin का मतलब यहाँ पे है that he was very familiar with all the people in his country. Country mean to say his land. And also with worthy women of the town. और उसकी जो जान पहचान थी, he was mostly acquainted with the people or the women which who were rich. For he had power of confession. ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है. He had a power of confession का क्या मतलब होगा कि he had that power of communication, soft skills, that कि वो किसी भी औरत के पास जाता तो उसे कन्फेशन करवा लेता. कन्फेशन कौन से रिलीजन में होता है? कैथोलिसिज्म में. कैथोलिक चर्च में आपको कन्फेशन करना होता है. So if this is the corruption called in the Catholic Church, or we used to say that earlier, we can say that in earlier times, in past times, that was the corruption के जो limiter होता था. Limiter is a person appointed by a church. He used to go from home to home, house to house, and he used to extract confession. वो अगर किसी को कोई पाप किया है, वो उसको उकसाता कि तू मुझे कुछ पैसा दे दे और तेरा कन्फेशन पे मैं तेरे को सर्टिफिकेट साइन करके दे दूंगा. सो दैट करप्शन द राइटर इज शोइंग. लाइन नंबर 218. For he had power of confession. Now I am coming on 221 line. He heard confession very sweetly. Now second thing is that he used to listen to confessions very sweetly, and his absolution was pleasant. Absolution mean to say the way he used to give pardon to the people, that was also very sweet. अब तो आप अंदाजा लगाइए कि how corrupt he is, that he was very much friendly, very much sweet, with the rich women only. आगे बता रहा है कि he was a lenient man in giving penance, where he knew he would have a good gift. जहाँ पे उसको अच्छा गिफ्ट मिलने की, he used to sense like I can get much money from this family, so then he used to pardon that family from on his behalf, from or from church behalf. फिर आता है लाइन नंबर 231. Therefore instead of weeping and prayers, one may give silver to the poor friars. इसीलिए वो उसका क्या मानना है कि you should not go to the church, and you should not go to the priest, and should not cry, and should not trouble yourself. You simply should pay money, and then जैसे हम लोग मंदिरों में जाते हैं, there is no harm, and I feel that I can confess कि हमारे मंदिरों में बाकायदा पैसे लेकर के, कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में दर्शन कराए जाते हैं. तो आप और हम जब भी ऐसा करते हैं कि इंतजार कौन करेगा, लेट अस पे एंड हैव द दर्शंस. So the writer says that he's showing to us the kind of corruption which is prevalent there. चलिए आगे बढ़ते हैं. लाइन नंबर 233 पे क्वेश्चन आया हुआ नेट में. His tippet was a fast full of knives. उसके हुड में, हुड का मतलब वो जो हुड होता है उसमें वो चाकू भर के रखता था, खूब सारे. चाकू का मतलब होता है नाइफ. अब यू कैन अंडरस्टैंड कि पुराने ज़माने में जो भी हाउसवाइफ्स होती थी उनके चाकू हमेशा घिस जाते होंगे. तो एक हाउसवाइफ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस चीज़ की ज़रूरत है? चाकू की. तो वो उसको चाकू देता था. दूसरा यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है? विच इज़ अ सिंबल. नाइफ इज अ सिंबल ऑफ मेल सेक्शुअल ऑर्गन. So you can understand that kind of symbolism is also present here. कि जो कुछ राइटर ओपनली नहीं कह पा रहा है, आई थिंक वो शायद हिडनली कह रहा है कि वो अपने हुड में बहुत सारे चाकू रखता था और वो फ्री में उनको दे देता था. एंड पिन्स टू गिव टू फेयर वाइव्स. वाइव्स का मतलब होता है हाउस वाइफ्स, और वो सभी औरतों को ये गिफ्ट देता था. इसका मतलब है ही वॉज वेरी लेक्चरस. That's great. The writer is saying that he was very immoral. He was a loose character person, okay, and he had almost sexual liaison with almost every woman whom he used to meet. Line number 236. He well knew how to sing and play on a rote.
अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर नेट, लाइन नंबर 236 लिख लीजिए। वो गाना गाता है एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, on a rote they can ask you a question like what is the meaning of rote here? Rote means a string instrument। इसका मतलब है कि he used to जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं फंसाता है, लड़कियों को, औरतों को गाना गाता है, फंसाता है, एंड उसकी आवाज भी मीठी है। His neck was white as a lily flower। लाइन नंबर 238 एग्जाम में आई हुई है बच्चों, कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन आ रखा है कि किसकी गर्दन लिली की तरह सफेद है। नाउ देयर इज अगेन अ सिंबॉलिज्म। You must have seen that, suppose I open this button this way, okay, and I just open it, and I want to show the inner part, cleavage and all. So the writer wants to say that he was that kind of person that outward complexion was a bit darkened because he used to move from place to place, but then he used to attract girls and ladies by opening his cleavage। तो ये दिखा रहा है कि he's otherwise these are cold countries and the neck is always covered, but he used to open his neck। इसका मतलब है कि he was again used to lure, attract, tantalize women। So his neck was white as lily flower। Furthermore, he was strong as a champion fighter। He knew the taverns well in every town। अच्छा, instead of knowing the places of religion, churches, उसको किसके एड्रेस ज्यादा पता है? Clubs, hotels, taverns, and every innkeeper and barmaid। उसको हर बारमेड का पता है। अगेन अ ग्रेट सटायर कि उसको हर तरह की जो बारमेड होती है, जो वन हु सर्व्स वाइन्स, उसका बहुत डिटेल नॉलेज है। 242 नंबर लाइन पे लिखा हुआ है, बेटर देन अ लेपर और अ बैगर वुमन। Church appoints, in actual practice, church appoints these kind of people, limiters who can go to public at large and can listen to their problems in the soul and can soothe them spiritually। But instead of doing that, or instead of knowing the downtrodden people or the people who are the have-nots in the society, have-nots, लेपर का मतलब होता है जिनको इसकी बीमारी लगी होती है, क्या बोलते हैं इसको, एक लेपर इज अ डिजीज, एंड बैगर वुमेन का नॉलेज नहीं है, जिनका नॉलेज इसको होना चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ आयरनी इज शोन। Okay, now I'm coming to line number, jump with me, the writer is coming to a next character, 264 पे आइए। somewhat he lisped। अभी तक वही कैरेक्टर चल रहा है, लिमिटर। he used to lisp। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। lisp का क्या मतलब होता है? तुतलाना, to speak in such a manner that you are not bit clear on your tongue, but bit stylish, that जैसे कंगना रनौत बोलती है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा स्टाइलिश बोलने की कोशिश करता है। नाउ आई एम रीडिंग ऑल द ब्यूटीफुल लाइन्स। समवट ही लिस्प्ड फॉर हिज अफेक्टेशन। अफेक्टेशन का मतलब शो ऑफ करने के लिए। well, I was going there and it's a little bit तो completely speaking little instead of that, as you all know that certain people who show their affected style of speaking, अभी मैं अगर affected style में बोलूँ तो I'll be just start skipping through the words and certain pronunciation so that I can make an atmosphere, I can show off that I know very good English। तो ये करता है। what he does, somewhat he lived for his affectations to make his English sweet upon his tongue। ये क्वेश्चन एट में आ रखा है। this is the couplet। to make his and in his harping when he had sung। और जब वो अपना हार्प बजाता है, जब वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है, his eyes twinkle in his head exactly as do the stars in the frosty night। तो उसकी आंखें जो हैं वो ऐसे चमकती है जैसे कोई फ्रॉस्टी नाइट में स्टार्स चमक रहे होते हैं। इसका मतलब है जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु इज क्वाइट सेक्सुअल एंड उसको अपने जाल में फंसानी है कोई लड़की, ओके, और वो बिल्कुल इस तरह से अट्रैक्ट करने में लगा हुआ है, बिल्कुल स्टाइलिश, कि बस किसी तरह से जाल में, स्नेयर में एक लड़की फंस जाए, है ना। तो आई वॉज इन द थिएटर ग्रुप ऑफ माई कॉलेज। तो एक्टर हम नहीं बन पाए और बहुत ही घटिया एक्टर हैं हम लेकिन आई यूज दिस वाइल आई टीच, तो वो बच्चों को अच्छा समझ में आ जाता है। दैट्स टीचर शुड गो टू एनी एक्सटेंट टू एक्सप्लेन द थिंग्स, and I'm taking liberty so that I can explain the things to you in a better manner। चलिए टॉपिक पर आते हैं।
टू मेक हिज इंग्लिश स्वीट अपॉन हिज टंग, ये भी मैंने पढ़ा दिया। लाइन नंबर 268 पे आइए। एज डू द स्टार्स इन द फ्रॉस्टी नाइट दिस वर्दी फ्रायर वॉज कॉल्ड ह्यूबर्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका नाम भी बता रखा है, बिकॉज देर आर सर्टन कैरेक्टर्स इन दिस प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें राइटर ने कई लोगों के नाम बताए। सो वन ऑफ द नेम इज, ये जो लिमिटर है इसका नाम बताया ह्यूबर्ट। लाइन नंबर 270 पे आ गया हूं मैं। अ मर्चेंट वॉज देयर विद फोक्ड बियर्ड, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। फोक्ड बियर्ड क्या होता है बच्चों? फोर्क, कांटा जिससे खाते हैं। सो दैट बियर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो देयर वाज अ मर्चेंट विद अ फोक्ड बियर्ड वेयरिंग party colored cloth. He was wearing multicolored cloth, and proudly he sat on his horse. What is the symbolism? Because this writer is not as plain, we call him father of English poetry. उसने जो कलरफुल कपड़े पहने हैं, इसका मतलब है दैट मच कलरफुल हिज पर्सनैलिटी। कलरफुल इन द नेगेटिव वे, नेगेटिव वे इन द सेंस कि जैसे लोग होते हैं वैसा वो अपने आप को बना लेता है। एंड इज वेरी शार्प माइंडेड, वेरी करप्ट इन द सेंस। ओके, लाइन नंबर 271 के बाद आई एम कमिंग टू लाइन नंबर 280। देयर विश नो वाइट, देयर वॉज नो वन हु न्यू दैट ही वॉज इन डेट। ये मर्चेंट इतना तेज है कि बातचीत इस तरह से करता है कि किसी को पता नहीं चलता कि इसके ऊपर कर्ज है। आपने कभी असली बिजनेसमैन देखे हैं? असली बिजनेसमैन अगर बहुत घाटे में भी चल रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए, लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वाले का ऑफिस में जाइए और अभी अभी चले जाइए, यू विल बी सरप्राइज्ड। यस, जैसा देश वैसा भेष, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के कमरे में अभी जाएंगे, तो जो मर्चेंट होता है ना, मर्चेंट माइंड का आदमी होता है, वो क्या करेगा, उसको पता चलेगा कि दैट यू आर एंटरिंग, तो वो झूठ मूठ में फोन पर बात करेगा, या हाँ वो 3 करोड़ की डीलिंग तो फाइनल हो गई है, और अभी 2 काम अभी और हाथ में है, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है बिल्कुल भी, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ही विल नेवर लेट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम नो दैट ही इज इन डेट। इसका मतलब है ये बहुत चालक। अच्छा, नाउ हाउ डज अवर राइटर नोज दैट दिस पर्सन इज इन डेट? This is called, that Chaucer had the ability to look beyond the clothes, beyond the person's outward appearance. Line number 285. A clerk there was of Oxford also. ये मैं verbally बता देता हूँ। Clerk का मतलब क्या है यहाँ पे? Cleric से related है। Clerk does not mean the way we use this word today. Clerk का मतलब है one who is taking training for becoming a priest. तो ऑक्सफोर्ड से बिलोंग करता है ये। एंड हु लॉन्ग बिफोर हैड बिगन द स्टडी ऑफ लॉजिक, ही इज स्टडिंग लॉजिक। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट डाउन अ क्वेश्चन टुडे। टुमारो आई विल आस्क यू व्हाट आर द 3 R's ऑफ मिडाइवल यूनिवर्सिटीज। मिडाइवल यूनिवर्सिटीज में 3 R's, कौन कौन से 3 R's, ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है कि कौन कौन से R's पढ़ाए जाते थे। व्हाट वर द मेजर सब्जेक्ट्स used to be they used to teach there in the universities. ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी, ऐसा नहीं है कि it was always like arithmetic was taught, rhetorics was taught. मैं पूरा आंसर I'm not giving, I'm giving you it as a task so that you can study. तो ये लॉजिक पढ़ता था। who long before had begun the study of logic, his horse was as lean as is a rake. अच्छा, what is the special feature of Chaucer? कि वो क्या करता है, विद हॉर्स ही जजेस द पर्सनैलिटी। जैसे एक आदमी की कार है और वो कार बड़ी डिलैपिडेटेड है और पुराने जमाने की मारुति 800 है, और सपोज दैट पर्सन इज मेंटेनिंग दैट कार, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट ही बिलोंग्स टू बिलो मिडिल क्लास। तो इन द सेम मैनर द राइटर इज शोइंग द हॉर्सेस, कि जैसा हॉर्स होगा वैसा ही उसका प्रोफेशन होगा, या वैसा ही उसका दैट पर्सन मस्ट हैव हैड that kind of a source of income and all. तो इसके पास इनकम नहीं है, राइटर ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है। एंड उसके बाद what he's saying, his horse was as lean as a rake. Lean horse mean to say that this person had very meager sources of income but looked emaciated and moreover abstemious. अब पता नहीं, now there comes the ambiguity in the text. What is the ambiguity? कि वो घोड़े को इमैशिएटेड मतलब सूखा हुआ, खाने को नहीं मिलता है, घोड़े को दिखा रहा है कि क्लर्क को दिखा रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड लाइक बोथ, कि दोनों की हालत बहुत पतली है, बोथ आर इमैशिएटेड, दोनों बहुत दुबले पतले हैं, घोड़ा भी और राइटर। इसका मतलब है कि द क्लर्क डज नॉट हैव एनफ मनी। फिर किसका रेफरेंस आता है इसमें? दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन,
Line number 295 में there comes the reference of Aristotle and his philosophy. The robes rich or filthy or gay, सॉरी वो rich कपड़े नहीं पहनता है, but he studies. Hello, am I audible? Hello, am I audible? There must be something wrong with the connection. Hello, am I audible? Am I audible? Am I audible, friends? Live classes have this problem. Okay, if I'm audible, then it's okay. Chaliye, that's great. Now I'm coming to line number 304. Those who have text can come to line number 304. Not a word spake he more than was needed. This was the special feature of this clerk of Oxford, that वो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है, जितना इसको बोलना है उतना ही वो बोलता है. It means he is a real educated person, you know. Line number 309 पे आइए. A sergeant of the law. Sergeant of the law का मतलब क्या होगा? एक हाई रैंकिंग सिटी पर्सन है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते थे. प्रूडेंट एंड वाइज, हु ऑफन हैड बीन एट द पोर्च ऑफ सेंट पॉल्स. लॉयर्स, मतलब ये लॉयर्स को सप्लाई करने वाला एक कैरेक्टर है. ओके, एंड नाउ आई एम कमिंग टू लाइन नंबर 325. Furthermore, he knew how to compose and draw up a legal document. Again, the writer has shown almost every other character in a very negative shade. ये दिखा रहा है कि जो सार्जेंट है ये लीगल केस को फोर्जरी कर देता है. देखिए, आपने कभी आपने देखा है वकील, आई एम सो सॉरी, देयर मे बी पीपल इन योर फैमिली हु आर लॉयर्स, बट आपको सबको पता है महात्मा गांधी in Hind Swaraj has said that, you know, lawyers are diseases for society. In what sense? Because somewhere, you know, I'm not saying that, you know, all the lawyers are of the same character, but mostly lawyers, you know, they propagate, they try to, you know, increase the feuds and all. तो यहाँ पर ये राइटर कह रहा है कि ये फोर्जरी करता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में कुछ चेंज कर देता है, एंड, यू नो, इज अ फ्रॉड. लाइन नंबर 331. A Franklin. Now there comes the reference of a Franklin. A Franklin was in his company. His beard was white as a daisy. ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है बच्चों, लिख लीजिए. किसकी दाढ़ी सफेद है डेजी की तरह? Again a French influence. When, you know, because earlier in the English poetry, the people did not use, the writers did not use to compare, you know, the things with flowers and all. तो ये एक रेफरेंस आ रहा है यहाँ पे. His beard was white as daisy. As to his temperament, he was dominated by the humor blood. Humor का नॉलेज सबको है कि मैं बताओ. Humor का मतलब होता है, जैसे चलो इंडिया की बात करते हैं. Let us talk about India. In Indian anatomy, in Ayurveda, we talk about three liquids, fluids: Vat, Pitta, Kapha. Okay, and, you know, our outward or say inward or complete personality is decided by, you know, that what is dominant feature of that particular Vata, Pitta or Kapha. But in Western culture, they have four, in the anatomy they have 4 humors. Humors means body liquids, fluids, जिसमें एक होता है sanguine. Sanguine means आप में हीमोग्लोबिन ज़्यादा है. एक होता है कोलेर. कोलेर का मतलब है वो पर्सन थोड़ा कोलेरिक हो जाता है, चिड़चिड़ा. ओके. एक होता है फ्लेम, PHLEGM. फ्लेम का मतलब होता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कफ है. कफ का मतलब है बलगम ज़्यादा बनती है, तो आप थोड़े से उदास, थोड़े से, यू नो, नॉन पार्टिसिपेंट काइंड ऑफ, न्यूट्रल काइंड ऑफ पर्सन आप बन जाते हो, है ना. तो क्या क्या बताया मैंने? ब्लड, जिसको क्या बोला? सैंग्विन, कोलेरिक, फ्लेगमेटिक, फ्लेम से बना फ्लेगमेटिक पर्सन. और एक होता है आपका ब्लैक बाइल होता है, जिससे अपन बोलते हैं मेलंकोलिक. तो मेलंकोलिया और मेलंकोलिक किसे कहते हैं? जो बहुत ज़्यादा उदास रहता है बात बात पे. मेलंकोलिया अगर आपको समझना है तो मेलंकोलिया इज कंसिडर्ड टू बी द मेन ह्यूमर ऑफ रेनेसां. इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ नेट के अंदर कि अगर आप, इफ़ यू स्टडी शेक्सपियर्स
मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो जो एंटोनियो है इज वेरी सैड एंड ही सेज दैट फ्रॉम वेयर दिस सैडनेस कम्स आई डोंट नो। मेलवोलियो है ट्वेल्थ नाइट में, ही इज अफेक्टेड विद दैट काइंड ऑफ ह्यूमर मतलब मेलंकोलिक। तो द राइटर इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमर के इस राइटर में फ्रैंकलिन के अंदर ब्लड ज़्यादा है। ब्लड ज़्यादा होने का क्या मतलब है? दैट इज वेरी लाइवली काइंड ऑफ पर्सन, लाइवली इन द सेंस क्वाइट सेक्शुअल। As to his temperament, he was dominated by the humor blood. He well loved a bit of bread dipped in a wine in the morning. और वो सुबह सुबह क्या पीता है? शराब। जैसे आपको पता है ऋषि कपूर रिसेंटली डाइड, उनके बारे में ये बात आती है कि वो रात को काफ़ी लेट आते थे शूटिंग से, तो उनकी सुबह बड़ी लेट मतलब फिर वो दिन में सोते होंगे, तो वो 6 बजे शराब पीते थे सुबह सुबह। So the writer wants to convey here a message that this person was Epicurean in nature. Epicurean in the sense के someone does not have a worldly care of for the people. तो उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको सुबह सुबह शराब मिल जाए। So वो अपनी ब्रेड को वाइन में डुबो करके पीता है। वर्जीनिया वुल्फ वाज मेलंकोलिक, यस शी कमिटेड सुइसाइड। मेलंकोलिक होते हैं बच्चों, मैं भी मेलंकोलिक हूँ। मैं बहुत डिप्रेशन आ जाता है तो थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन डिप्रेशन डज नॉट मीन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम इन लाइफ एंड ऑल, लाइक जॉनसन्स 4 एलिमेंट्स, यस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो बेन जॉनसन ने लिखी है। सो स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। आप लोग मेरी इसको शेयर कर रहे हैं ना, और जितने भी बच्चे आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं वो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है मैं इसका एक अच्छा सा लेक्चर YouTube पे डाल दूं, तो ताकि आप लोग उसको देख लो। कल हम लोग इसका लास्ट लेक्चर लेंगे, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं थोड़ा सा। He well loved a bit of bread dipped in his wine. क्वेश्चन आएगा नेट में कि कौन अपनी ब्रेड को वाइन में डिप करके पीता है, खाता है। His custom was always to live in delight. He was for he was Epicurus' own son. Epicure कौन था? एपिक्यूरियन एक वर्ड है इंग्लिश में, जैसे हमारे यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो लोग मतलब कर्ज लेकर के मजे करो, वैसे एपिक्योर के बारे में ही वाज अ फिलोसोफर एंड ही यूज्ड टू से दैट यू शुड नॉट वरी अबाउट द थिंग्स ऑफ लाइफ, यू शुड एंजॉय योर लाइफ ओनली। सो पूछ सकते हैं हु वाज सन ऑफ एपिक्यूर। एपिक्यूरस का सन कौन? मतलब वन हु वाज फॉलोइंग द फिलोसफी ऑफ एपिक्यूर, सो ही वाज फ्रैंकलिन। Then comes line number 340. Saint Julian, he was in his country. Saint Julian का नाम लिख लीजिए। Saint Julian is considered to be the patron of hospitality. जैसे अपने यहाँ पे बताइए हॉस्पिटैलिटी की गॉडेस किसको माना जाता है? I have people from South India, I have people from East India also, North India. बताइए मुझे कौन हमारे घरों में किसको भोग लगाते हैं हम कि घर में खाना कम ना पड़े और कोई भी मेहमान आ जाए तो वो ढंग से खा ले। कार्पे डिम इज नॉट द करेक्ट वर्ड मधुसूदन जी। कार्पे डिम का मतलब तो होता है दैट गैदर योर रोज बर्ड्स, मतलब कि इफ यू आर यंग देन यू शुड मेक सेक्स, यू शुड मेक लव एंड एंजॉय योर लाइफ विद योर बिलवड। दैट इज अ डिफरेंट फिलॉसफी। ओके, कार्पे डिम इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर मेकिंग लव। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि हमारे किचन में कौन से गॉड गॉडेसेस को हम इंपॉर्टेंट मानते हैं? शादी ब्याह में सबसे पहले उनको भोग लगाया जाता है। अन्न देवता नहीं बेटा, कुमकुम नो, सॉरी बेटा। इतने विद्वान मुझे देख रहे हैं, एनीबडी हु कैन गिव मी एन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए लेट मी टेल यू। देखिए, एक तो हमें पता होना चाहिए कि एक अन्नपूर्णा होती है। शाबाश। अन्नपूर्णा की साउथ इंडिया में बहुत पूजा करते हैं। गन्ना होता है उनके हाथ में, अनाज से भरा हुआ एक अ बॉल फुल ऑफ राइस, एंड दिस गॉडेस इज वर्शिप्ड इन साउथ इंडिया। और अन्नपूर्णा हमारे यहाँ पर भी नाम भी होते हैं, मेरी मामी जी का नाम है अन्नपूर्णा। लॉर्ड गणेशा इज नॉट कंसिडर्ड। हमारे यहाँ पूछते हैं बिकॉज ही इज द विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता, इट मीन्स टू से दैट ही विल avoid the kind of obstacles. The Lord, a deity, one who will remove obstacles from your path, that is Ganesha. Okay, but Annapurna is particularly so. What Annapurna stands for Indian students, Saint Julian stands in the Christian culture, कि वो लोग किसी को भी अग्नि सुप्रिया हम नहीं मानते, अग्नि को भोग जरूर लगाते हैं अपन, लेकिन मतलब खाना घर में ज़्यादा रहे इसके लिए हम किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? अन्नपूर्णा देवी को। चलिए, लक्ष्मी का एक अवतार है वो।
लक्ष्मी के कई रूप हैं, अष्टलक्ष्मी होती है। इंडियन स्टूडेंट्स जब लिटरेचर पढ़ता है तो उसको बहुत वास्ट नॉलेज होती है। अंग्रेज तो हमारे आसपास कहीं अड़ते ही नहीं है। वी आर फार बेटर देन द इंग्लिश पीपल। knowing English is not knowledge. Knowledge means you can correlate, you can understand things, and you can explain the things and all. चलिए मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। सेंट जूलियन का रेफरेंस आ गया। कुबेर इन नॉर्थ इंडिया, नहीं आप अपना इतना नॉलेज मत झाड़ो। कुबेर एक अलग कॉन्सेप्ट है, अन्नपूर्णा अलग कॉन्सेप्ट है। मैं वापस आ रहा हूँ अपने टॉपिक पर, सेंट जूलियन। उसके बाद में तो सेंट जूलियन इज रिलेटेड टू फ्रैंकलिन। ओके, नाउ लाइन नंबर 353। ये जो फ्रैंकलिन है, ये गांव में इतना खाना रखता है दैट हिज टेबल डॉर्मेंट इन हिज हॉल ऑलवेज। इसके घर में हमेशा टेबल पे खाना लगा रहता है। स्टूड कवर्ड विद टेबल क्लॉथ एंड रेडी ऑल द लॉन्ग डे। जस्ट इमेजिन कि किसके घर में हमेशा खाना रहता है। जस्ट इमेजिन, अभी अपन मदर्स लाती है घर में, लेकिन फ्रिज भरा हुआ है, अलमारी में हर तरह की नमकीन, बिस्किट, तरह तरह के फ्रूट्स, और कभी भी कोई मेहमान आ जाए, you are ever ready with dosa, pakoras. For a common family with meager income, it is not possible. इसका मतलब है कि कहीं करप्शन है। So the writer wants to convey a message कि इसके घर में हमेशा टेबल लगी रहती है। इसका मतलब है that this person is corrupt. Money comes from the other sources also. Line number 356 में इसने लिखा है, he was a member of parliament many times. And there is a satire that he was a corrupt person. The member of parliament, it means he used to extract money from the other sources. Line number 356, he was a member of parliament. 359 पे आ रहा हूँ, he had been a sheriff and an auditor of taxes. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑडिटर ऑफ टैक्सेस है। आज भी आपने देखे होंगे कि जो टैक्स के ऑडिट करने जाते हैं वो कितना पैसा खाते हैं, हाउ करप्ट दे आर। सो द राइटर शोज दैट ही वाज अ समवेयर corrupt person, and outward richery, outward that flamboyance, outward richness which is the writer is showing is the result of his corrupt nature. There was nowhere such a worthy landowner. And again that sarcastic tone of the writer, इसको tone कहते हैं। अजी इतने अच्छे हैं, इतना मतलब खाने पीने का ध्यान रखते हैं, आप जब चले जाओगे तभी आपको खाना खाए बिना आने नहीं देंगे, बड़े अच्छे आदमी हैं। टैक्स इंस्पेक्टर हैं वैसे, वो बहुत इनकम है उनकी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये तारीफ हो रही है कि समवेयर मैं किसी की जड़ें काट रहा हूं, या मैं उसको तारीफ करते करते समवेयर इन द अंडर करंट आई एम क्रिटिसाइजिंग दैट पर्सन कि वो इनकम जो है वो शुद्ध इनकम, प्योर इनकम नहीं है। लाइन नंबर 361, लाइन नंबर 361 से 365 तक द राइटर हैज टेकन ऑल द मेजर कैरेक्टर्स। हैबरडैशर, कारपेंटर, वेब का मतलब वीवर यानी कपड़ा बुनने वाला, डायर का मतलब रंगने वाला, टेपेस्ट्री का मतलब होता है मोमबत्तियां बनाने वाला। ये 5 तरह के लोग दिखाए हैं। एंड द राइटर हैज शोन दिस वर्किंग क्लास इन सच अ मैनर दैट दे ऑल आर वेरी रिच। उन्होंने अपने टूल्स जो अपने हैं वो अपने चांदी में उनके टूल्स जो है वो कवर्ड हैं। तो this way the writer has shown to us that the time was very good. Then the line number 379, a cook they had. Society does not. That's why timelessness is there. एक राइटर को हम बिग राइटर या शेक्सपियर जैसे, शेक्सपियर इज स्टिल रेलेवेंट, चॉसर इज स्टिल रेलेवेंट, लेकिन हम देखेंगे बर्नार्ड शॉ इज नॉट दैट मच रेलेवेंट। इसका मतलब है कि इफ यू आर अ राइटर एंड यू आर राइटिंग बाय लुकिंग एट द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, देन ऐसा कहा जाता है कि ह्यूमैनिटी कभी चेंज नहीं होती। तो हम देख रहे हैं कि द सेम करप्शंस आर देयर। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, द राइटर जिस तरह से राइटर ने करप्शन दिखाया है वो इसी को कहते हैं कि दीज कैरेक्टर्स आर साइक्लिक इन नेचर। साइक्लिक मतलब आप कहीं भी चले जाएंगे यू विल फाइंड दीज पीपल अराउंड यू, दिस काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। अब आ रहा है कुक। अ कुक दे हैड विद हिम फॉर द नन्स। उनके साथ एक कुक है। उस कुक का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें द राइटर हैज शोन वन थिंग, जिसमें क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में। लाइन नंबर 385 पे मैं आ रहा हूँ। बट इट वॉज अ ग्रेट हार्म एज इट सीम टू मी, ही वॉज अ गुड कुक, ही कुड कुक एवरीथिंग। बट राइटर ने उसमें एक चीज दिखाई है दैट ही हैड एन ओपन सोर ऑन हिज शिन। उसके एक फोड़ा हो रखा है शिन के ऊपर,
As for white pudding, he made that of his best quality. Again, symbolism. Okay, everything is okay from inside as the personality or the trade is concerned. But उसके शिन पे फोड़ा दिखा करके the writer और अल्सर दिखा करके the writer has shown to us that he was corrupt in other sense. कुक कैसे होते हैं? आपने कभी जिनके घर में कुक या महाराज जी बोलते हैं, आप कभी जाके देखिए, कई फिल्मों में भी दिखा रखा है कि वो खाना बनाते बनाते झूठा कर देते हैं. इसका मतलब है, या वो गोलगप्पे खिलाने वाला है, गोलगप्पे खिलाने वाला गोलगप्पे खिला रहा है, साथ में वो कान की खुजली कर रहा है, गोलगप्पे खिलाए जा रहा है. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है ही इज नॉट क्लीन एंड ही इज नॉट प्योर इन हिज कुकिंग. दैट इज द सिंबॉलिज्म. देन द राइटर एक्सप्लेन्स टू अस अ शिपमैन. शिपमैन की जो एक्चुअल क्वालिटी है वो आती है लाइन नंबर 394. अच्छा, तो अब मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने काफ़ी बोल लिया है एंड इट्स मोर देन 1 hour. इट्स 11:19. सो वी विल डू वन थिंग. वी विल रीड द रेस्ट ऑफ द पोएम टुमारो. आधी पोएम आज हो गई है और रेस्ट ऑफ द पोएम वी विल रीड टुमारो. टुमारो आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो मुझे फ़ोन करके मतलब बातचीत कर सकते हैं. पीडीएफ्स वगैरह जिनको मिल गई है वो घर पे उनको पीडीएफ्स को पढ़ें. ओके, एंड थैंक यू वेरी मच. मैं थोड़ा सा टायर्ड महसूस कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन फॉर मोर देन 1 hour and 20 minutes कंटिन्यूसली. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.